32-bit data inside the microprocessor. All these things are working in RISC processor. Next we will have to see ARM architecture. Next we will have to see ARM architecture. What is ARM architecture, or what are the advantages will ARM architecture will have? First is here, every instruction requires, or every instruction controls ALU. And next one is here, multiple load and store operation. And third one is here, auto increment and auto decrement addressing mode. And the last one is here, conditional execution is there. Conditional execution is there. Okay. So first I may discuss kariya every instruction controls ALU. Whatever the operation will perform inside the microprocessor or microcontroller, that is because of ALU. ALU is here, arithmetic logic unit. Arithmetic and logic unit. Arithmetic रो काम कौन? Binary addition, binary subtraction, binary division and binary multiplication. Logical unit रो काम कौन? It will perform logical OR operation, AND operation and NOT operation. Okay. आमे यही सब जिनस बुलियन फंक्शन ने पढ़ी सारी ऑलरेडी, एंड तुम मैंने ये जिनस पूरा भल से जानी थी अभी. आउ नेक्स्ट वन इज ए मल्टीपल लोड एंड स्टोर ऑपरेशन. मल्टीपल लोड आउ स्टोर ऑपरेशन. लोड आउ स्टोर ऑपरेशन काम होची, इट विल स्टोर डाटा एंड रिट्राइव द डेटा. ओके, ये डेटा स्टोर करिवो आ जो डेटा को स्टोर कला इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर ताकू कोन करिवो, ताकू रिट्राइव करिवो. रिट्राइव मींस ही विल गिव यू द रिजल्ट, ही विल गिव यू द आउटपुट. नेक्स्ट वन इज ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड. ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट मींस होजी सिक्वेंशियली आज जते बेले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हबो सेते से ऑटो इंक्रीमेंट हबो, देन ऑटो डिक्रीमेंट हबो. ऑटो इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस एंड ऑटो डिक्रीमेंट मींस इज योर माइनस माइनस. ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द ARM architecture. And last one is your conditional execution. Conditional execution कौन? समझते जानी तो what is conditional statement? Conditional statement is here, if it is yes, then the program will complete. If it is no, then it will go to the next instruction to execute the program. Okay, if it is yes, then what is happening? Program ताहले complete हे गला. जदि no ताहले आमे next function को जीवा तारे program को आमे complete करिया. That is your conditional execution. Okay, so next we will discuss ARM register organization. ARM register organization. Also it is called as ARM register set. Okay, what is, so in the next class we will have to discuss the ARM register organization, and one by one I will discuss all these things. Thank you.